morning, my dear students. I welcome you to today's online classes. In the mathematics class, the previous class we have learned chapter number 7, fractional numbers. Today we will continue with the same chapter. In the previous class, we have discussed fractional numbers and I made you understand that to identify equal parts and two unequal parts. Okay, you maybe have understood. Let us revise it again. So children, if I made one figure, see this one is circle. This figure is called as circle. This figure is square. Okay. And if I made a line in between from top to bottom like this. Okay. And in the square also, if I made a line from top to bottom. Okay. So what can you find in this? That here this is the whole part. Okay, before dividing this it was like this, in this form also only. Before dividing we can see this whole circle like this form. This is called as whole, that is entire quantity. होल, इसको होल बोला जाएगा जब बिना किसी डिवाइड कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं होगा, नो डिविजन विल बी देयर, देन दैट इज कॉल्ड होल. और इसमें पहले क्या था, स्क्वायर था, देन दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज होल. बट हियर after drawing line, this figure has been divided into two parts. Okay, two parts. What are the parts here? See, after separation divide करने के बाद two parts ऐसे बनेंगे, right? Two parts they can be seen like this, and in the square itself the two parts can be like this. Yes or no? We can find two parts here after drawing this line. So these parts you have to see which one is bigger or which one is a smaller. क्या आपको इसमें से कोई बड़ा और छोटा दिख रहा है? No, both the parts are same. So this part we can say it as two equal parts. Two equal parts. And here also both the parts are looking same. This is the first part and this is the second part. Yes children. So both the parts are same. You cannot find out which one is bigger or which one is smaller. Same दिख रहा है. That means this figure is having two equal parts. Okay. If I made another figure, this is a triangle. Yes, this is the shape of a triangle. If I draw a line from here to here, okay, from left hand side to the right hand side, we can again see two parts. Okay, but if I made this separated part, do I able to see which one is the greater or which one is the smaller? We can find this one is little smaller and this one is little bigger. Yes or no? Yes. This one is bigger part and this one is a smaller part. So this figure cannot be can be said as two unequal parts. Though they are having two parts. Here also two parts are there. Here also two parts. Here also two parts. But here the parts which are made after this line, so these parts are not equal. One is bigger and one is smaller. So we can say this part has two unequal parts. Okay. If any figure is having two parts like this, then this one is called as 1/2. What can be written as 1/2, or we can pronounce it as 1/2. इस फिगर को अगर एक लाइन ड्रॉ होता है, अगर टू पार्ट्स बनते हैं, वन पार्ट एंड वन पार्ट. ओके, सो एक पार्ट को अगर बोला जाएगा 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको हम बोलेंगे 1/2. 1/2. ओके. So children, here I had made some figures. Let us do. Here 3 figures I had made. Any line is drawn here? No. That means this figure is whole. Entire part is empty. No line is drawn. No separation. So this is called as whole. And if I made a line like this, okay, how many parts can be seen? Two parts. So this has been divided into two equal parts. Yes. And if I again made this line like this, and if I color or shade this one part, okay, if I color and shade this one part, if it is been asked that shaded part, आपको अगर पूछा जाए how many shaded parts are there, what you will be saying? One part is shaded and one part is not shaded. So shaded part पूछा गया है तो उसको पहले 1 लिखेंगे and
write down 2 like this. Okay. अगर इसी में आपको पूछा जाएगा अनशेडेड पार्ट, कितने पार्ट शेडेड नहीं है, that will also be the same. आपको पहले देखना है कितने पार्ट शेड नहीं है, ये पार्ट शेड नहीं है, that is 1. You'll write down upside and put a this fraction bar, fraction line, and total कितने parts हैं 2. So you write down 2 like this. And one more thing, whatever number we are writing upside is called as numerator, yes or no, and this is called as fraction line, and after below that we are writing denominator. What we are writing? Denominator. This is we are writing it in the fraction form. इसको fraction form में लिखना बोलेंगे. ऊपर न्यूमरेटर रहेगा एंड डाउन साइड डिनोमिनेटर रहेगा. फर्स्ट आपको देखना है कि जो भी नंबर है, सपोज ये 1/2 फ्रैक्शन है, सो 1 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर. एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन, ऊपर में जो भी आपको पूछा गया है जैसे अनशेडेड पार्ट, वो आपको लिखना है. अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं वो आप लिख देंगे. देन नेक्स्ट जो नीचे रहता है, और नीचे आपको काम करने कितने पार्ट्स दिए, कितने पार्ट्स मेड हुए हैं वो आपको नीचे लिखना है. If I this is the concept of 1/2. Okay, this is the concept of 1/2. 1/2 कि आपको 2 पार्ट्स दिए हैं, उसमें से वन अगर एक 1 पार्ट को कंसिडर करोगे तो 1/2 लिखोगे, और इस पार्ट को भी कंसिडर करोगे तो 1/2 लिखोगे. दैट मीन्स अगर 2 पार्ट्स बना हुआ है लाइक दिस, 2 पार्ट्स आर मेड, इस दोनों को आप ज्वाइन करोगे, कंबाइन करोगे. दिस 1/2 अगर इस पार्ट को कंसिडर करें 1/2, एंड दिस पार्ट इफ यू कंसिडर दिस ऑल्सो बिकम्स 1/2. 1/2 दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका ये फिगर बनेगा, दैट इज 1 द होल. राइट. Now next question, I have taken shade 1/2. Here some figures has been drawn. You have to shade one part. जितने भी figures हैं आपको उसका हाफ मतलब आधा शेड करना है. Let us do. Here count the number of circles children. 1 2 3 4 5 6. 6 सर्कल्स आते हैं. 6 सर्कल्स का हाफ कितना होगा उस पार्ट को आपको शेड करना है. This part I had shaded. Okay. Then second circle I had shaded. Then third circles I had shaded. Now how many circles are left? 1 2 3 and 3 circles are shaded. This is we are doing it shading in the form of 1/2. हाफ 1/2 शेड करना है तो आधा शेड किया और आधा अनशेडेड है. ओके. सेकेंड वी हैव ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल्स. 4 ट्राइंगल्स है तो 4 ट्राइंगल्स का हाफ कितना होगा 2. सो वी विल शेड दिस 2 ट्राइंगल्स एंड वी विल नॉट शेड दिस 2 ट्राइंगल्स बिकॉज हाफ बोला है, 1/2 बोला है. 4 ट्राइंगल्स का हाफ 2 होगा तो 2 को शेडिंग करेंगे. नेक्स्ट वी हैव दिस फिगर. हाउ मेनी फिगर्स? लेट अस काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वी आर हैविंग 10 फिगर्स. तो 10 फिगर्स का हाफ कितना हो जाएगा 5. तो वी विल शेड एनी 5. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वो एकदम लाइन वाइज जाएंगे. वी कैन शेड एनी ऑफ द फिगर, दैट मीन्स 5. So if I count now, how many shaded parts are there? 1 2 3 4 5. 5 parts are shaded and unshaded part 1 2 3 4 5. 5 are unshaded parts. Next question number 4. We are having semicircles. Let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 circles we are having and 8 circles का half कितना होगा 4. So we will shade this 4 semicircles. Not in line wise necessary. आपको शेड करना है एनी 4, कोई सा भी 4 शेड कर सकते हैं. आपको फाइंड आउट करना है कितने हैं, काउंट करेंगे एंड जितने भी नंबर्स दिया है दैट यू हैव टू मेक हाफ. उसका हाफ करना है, उसका आधा करना है एंड देन यू कैन डू द शेडिंग लाइक वाइज. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? So children, again we will see some few topics now. See, this is the circle, this is the square. This is again I made circle and this is the square. This is whole. No parts has been divided. No parts can be seen. इसको भी होल है, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, कोई डिविजन नहीं हुआ है. ओके. आफ्टर दिस इफ आई मेड दिस लाइन लाइक दिस, तो कितने पार्ट्स बने 2 पार्ट्स. सो विल राइट डाउन इट एज 1/2. ओके. 2 पार्ट्स बने हैं. 1 पार्ट अगर इफ वी कंसिडर विल राइट 1/2 एंड इफ यू कंसिडर दिस पार्ट, अगर इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट के बारे में पूछा देन यू राइट डाउन एज 1/2. अगेन दिस स्क्वायर I made a line here. Again 2 parts can be seen. अगर इस पार्ट को देखा जाए तो ये भी 1/2 है.
and इस पार्ट को भी देखा जाए then it also becomes as 1/2. Okay, now children, this we have seen 1/2. If I made again one more line like this, if I draw one more line, what can you see? Difference is there. Now you can see 4 parts. See, first part, second part, third part, fourth part. 4 parts can be seen, and the same way in the square I made one line like this. Here you can see the difference again. Here from 2 parts it became 4 parts. It will divide it into 4 parts. 1, 2, 3, 4. Okay, so now the partition made like this. This is the first part. This is the second part. This is the third part, and this is the fourth part. 4 parts can be seen, and in the square also 4 parts are made. Okay, so 4 parts are there, so we will write down it as by 4, and if we consider one part, we will write down 1/4. In the same way, how many parts total altogether? 4 parts, and if we consider this fraction, this part, we will write down it as 1/2. Okay, for any each part is considered as 1/2. ये भी 1/4 कहलाएगा, ये भी 1/4, this one also 1/4, and this one also will be called as 1/2. इसमें भी जो पार्ट्स है, एक पार्ट से 1/4, मतलब ये भी 1/4 बोलेंगे, इसको भी 1/4, दिस पार्ट को भी 1/4, दिस पार्ट ऑल्सो कॉल्ड एज 1/4. ओके, 4 अलग अलग पार्ट्स बने हैं, उसको एक एक पार्ट को 1/4 बोलेंगे. पहले क्या था, 2 पार्ट्स था, तो हम एक एक पार्ट को 1/2 बोलते थे. यहाँ 4 पार्ट्स बने हैं, देन ईच पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1/4. ओके, एंड यू कैन सी all the parts are equal. All the parts are equal, equally divided. 1/4 को हम कैसे लिखेंगे? We'll write down like this. 1/4. Okay, 1/4 को हम लिखेंगे 1/4 like this. 1/4. And also it is called as quarter. It is called as quarter. I am repeating the spelling, children. QUARTER, quarter. 1/4 ऐसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, देन इन द नंबर फॉर्म, वर्ड्स फॉर्म 1/4, and also it is called as quarter. QUARTER. Okay, now again I made this one, or I can draw one line like this. Okay, this again 2 unequal parts. If I made this line also, okay, 2 lines are being made, and how many parts? 4 parts. But these 4 parts are equal? No, these 4 parts are unequal. And in the square also, if I made a line this, okay, and if I made one line like this, then again 4 parts has been made. 4 parts है, इसमें भी 4 parts है, and इसमें भी 4 parts है, but here the parts are equal, same है, and here the parts are different. This one is bigger, this one is the smallest one, this one is this both are smaller and bigger. Okay, this one is the most bigger space, and this one is the smaller part. This one also is 1/4 unequal parts. ये दोनों फिगर इक्वल पार्ट्स में नहीं कहा जाएगा, इनको इक्वल पार्ट्स बोल सकते हैं क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड है. बट दिस फिगर्स वी कैन सी पार्ट्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, तो सो इनको बोलेंगे 4 अनइक्वल पार्ट्स, एंड इन फिगर को भी बोलेंगे इट हैज 4 अनइक्वल पार्ट्स. ओके चिल्ड्रेन, अगर शेडेड पार्ट्स पूछा जाएगा तो आपको देखना है हाउ मेनी फिगर्स आर देयर, एंड यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस. अगर पूछा जाएगा, अगर एक पार्ट को भी शेडेड करेंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज 1/4. ओके, एंड दिस ऑल ऑफ today's class, children. Further we will discuss some more topics related to the fractional numbers. Go through the chapter. Have a nice and cheerful day.